welcome to the series 4 of One Guru, One Technique. This is devotion to one Guru or devotion to the Guru. To begin the session, we'll start with Guru chanting. Yes, Anju? Yes. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara, Guru Sakshat Param Brahma, Tasmai Shri Shri Gurave Namah. Tasmai Shri Shri Gurave Namah. Tasmai Shri Shri Gurave Namah. Om Shri. In this series, we have with us Miss Anju Gupta. She is an art excellence, that means children and teenagers faculty of art of living from Jammu and Kashmir. Over to you, Anju. With me, Priya Menon, children and teenagers faculty from Coimbatore, and also the happiness course teacher. Right. So this is quite interactive session regarding devotion and emotion. Yeah, how they are parallel. Yes. So Anju, what exactly is emotion for teenagers, especially because they go through a lot of ups and downs in life. They have a lot of confusions. They don't know how to decide. So what exactly is this emotion from the teenager's point of view? अभी जो बच्चे कोई अप्स एंड डाउन से नहीं निकल रहे, बट अप्स एंड डाउन विद इमोशन जरूर निकल रहे. उनको बिल्कुल नहीं पता कि इमोशंस हैंडल कैसे करनी है. हम लोग मोस्टली किस पे फोकस करते हैं? एजुकेशन पे, कि हमारे बच्चे इंजीनियर बने, सीए बने, डॉक्टर बने. बट कहीं ना कहीं हर पेरेंट्स को अंदर से एक डर है, अरे ये बाहर जाएगा, ये कैसे रहेगा, ये कैसे टैकल करेगा, क्या टैकल करेगा. फाइनेंशियली दे कैन टैकल बिकॉज है सबके पास, बट द मेन थिंग इज how they will tackle their emotions. This is very very important. Nowadays आपने देखा होगा mostly cases 16 साल, 17 साल, 18 साल ड्रग्स या सुसाइड, बहुत ऐसा कुछ देखने को मिलता है. Why? Because इमोशनली वो इतना वीक है कि वो इस चीज में इंडल्ज होते हैं, वो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हैं. हमने उनको एजुकेशन हैंडल करना दिखा दिया, प्रॉपर टेक्निकल एजुकेशन बेस्ट से बेस्ट दे रहे हैं, लेकिन द मेन जो हमें चाहिए, जो थ्रू आउट हमारी लाइफ में चलता है, जो थ्रू आउट हमें जिसके ऊपर चलना है, दैट इज इमोशन. Correct. And Anju, have you noticed even in a friendship, even in anything, they're not able to stick to one personality, one person, because they want variety. And the mind races for so many varieties. Of course, I'm not against varieties, but when it comes to a relationship, when it comes to an emotion, I would personally feel it's good to have, people say childhood friend and all that, that sustains. So a one-pointed focus missing in teenagers, especially in this generation. What do you think so, Anju? Mostly, क्या डिफरेंस आ गए कि टीनेज में क्या हो गया कि हम लोगों के टाइम गेम्स, आउटडोर गेम्स बहुत होती है, और गेम्स इटसेल्फ बहुत सारी चीजें सिखा देती थी. सो हम लोग जो शेयरिंग में गेम्स खेलते थे, लीडरशिप क्वालिटी सीखते थे, शेयरिंग सीखते थे, आपस में डिसिप्लिन सीखते थे, सब कुछ कितनी छोटी छोटी चीजें सीख जाते थे. अभी तो आउटडोर गेम्स है नहीं, है भी है तो वो पेड है, गए तो वो उससे इतना कुछ आता नहीं जितना वैसे नेचुरल वे से खेलने से हमें कुछ आता है. अब ये सब खत्म हो गया, बस पेरेंट्स के साथ अटैच कर, पेरेंट्स के साथ वो एक कवच में. अब जब वो कवच खुलेगा, उनको बाहर निकलना है. द मेन प्रॉब्लम, उनको बाहर कैसे निकलना है ये सीखना. या तो फिर वो एक अब्रप्ट साइड पे चले जाते हैं, और या वो इतने डोसाइल होते हैं कि पेरेंट्स वरीड हो जाते हैं कि इनको हम बाहर कैसे निकालेंगे. तो मेन इम्पोर्टेंट जो प्रिया दीदी भी जिस चीज के लिए सीरीज बना रही हैं, मेन है कि हम आपस में बैठे तो सोचे कि इसका हल क्या है, क्या कैसे वो, चाहे टीनेज हो और चाहे भी उनके बड़े जॉब, लाखों करोड़ों की जॉब लग जाती हैं, बट इमोशनली इतना सा कुछ प्रिक होता है, हम ऐसे बिल्कुल बैठ जाते हैं.
बिल्कुल ऐसे बैठ जाते हैं। उसका एक ही रीजन है कि हमें सबके साथ जुड़ना है, बट हम अपने साथ ही जुड़ते नहीं। हम सबको टैकल करना चाहते हैं, बट अपने को टैकल करना हमें नहीं आता। दैट इज मेन थिंग। वही बच्चे हैं, 2-2 घंटे मोबाइल पे या फ्रेंड्स के साथ गॉसिपिंग होगी, बट अगर उनको हम, एक सिंपल सी बात है, हम बच्चों को ये नहीं बोलते, टीनेज के बच्चों को, कि तुम 20 मिनट मेडिटेशन करो, तुम आधा घंटा। 5 minutes यू कैन स्पेंड विद योरसेल्फ। बहुत सारी चीजों का हल मिल जाएगा हमें। ओनली 5 minutes, दिन में 24 hours होते हैं। 5 minutes मॉर्निंग और 5 minutes इवनिंग, क्या हम अपने साथ नहीं बैठ सकते? नहीं प्रिया दीदी? Yeah, very true. You know that this is where the techniques, जो भी हम techniques सीख रहे हैं ना, that's very important here. Because when you start doing the Sudarshana Kriya and the teenagers pranayam, you will see a difference. Like, you know, me and Anju was discussing why children are going abroad and studying. Have you ever thought about their emotional thing? Why are they running away and going into the thing? We were discussing, na, Anju. What is exactly? Actually, they are running away from the known people. They don't want anybody to interfere in their life. क्योंकि बाहर की दुनिया ऐसा है कि especially abroad, they have their privacy and they just want to be there. But India as a society nahi hai na. In India, people are with each other, and I would say that is a strength of India. But somewhere down the line, they have forgotten. Like you and me, we were in joint families, isn't it not? And today, even why we are so strong to stand up to society, it's because of the joint family system. We were able to compromise. And yes, everybody has ups and downs. No person is perfect, but accepting them as they are, you know, being with them and being their strength is something very unique. And this is where, you know, we have to make the children understand that actually they're not running away abroad for studies. Psychologically, if you see, they are running away so that they can have a life of their own. Now, life of their own also, are they going inside? बाहर भी वो नहीं है ना. What is happening there also? They're not going. They are going there. They are getting Life their culture without interference. हाँ, correct. They don't want anybody to interfere. Parents भी नहीं interfere करना है. And the ultimate thing that I have seen nowadays in teenagers, they don't want to get married. This is very, you know, how many parents have cried in front of us. See, the choice is yours, I agree. But if you really think deep from inside, why do you not want to get married? You don't want to accommodate anyone. There is a fear in you that will I be able to compromise? India was not a country like this. India used to accommodate everybody. In fact, there are saints in a family. If you come to JNK, I've seen so many. She was discussing female saints, male saints who are with the family, with the children. So you need, even in spirituality, you need not compromise. You can be with everything, follow one technique. So and why this is happening is because we are not able to accept each other. No, we want how I want, I should be with Anju. Anju also should be the same. That doesn't work, na. Each person is different. So emotions will come. Handling, how do we handle the emotions is what Art of Living's teenagers course, Med Yoga teaches you. And with the more you start practicing, because the only technique that we teach is that the more you start practicing, what happens, Anju? The emotions has 3 levels. No, you were discussing. You can tell that. It's very beautiful. धीरे धीरे क्या होता है कि जब हमें सपोज हम सुदर्शन क्रिया प्रैक्टिस करते हैं, कोई भी टेक्निक है, वी स्पेंड 5 minutes मॉर्निंग इवनिंग सुदर्शन क्रिया एक्सपीरियंस की, एंड वी फील अ ब्लिस इनसाइड, वेरी मतलब डिफरेंट सी पीस ऑफ माइंड हम अपने अंदर एक्सपीरियंस करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में, ठीक है. उसके बाद क्या होता है कि हम किसी भी इमोशनल लेवल पे स्ट्रक होते हैं, दैट इज हेट्रेड, दैट इज जेलसी. जैसे बच्चे स्कूल से आते हैं, मम्मा मुझे उसने ये कह दिया. अगर वो क्रिया कर रहा होगा बच्चा, वो थोड़ी देर भी उसको ये छोटी सी टेक्निक कर रहा होगा, तो उसको वो ज्यादा चीज प्रिक करेगी. और बट उसको हैंडल भी करना आएगी. हैंडल कैसे करना आएगी, वो सिंपल सी एग्जांपल है. अगर आपने बहुत टेस्टी मिठाई खाई हो, तो उससे कम टेस्टी वाली आपको कभी पसंद नहीं आएगी. तो जब आप एक बहुत अच्छी पीस ऑफ माइंड बच्चे क्रिया के बाद एक्सपीरियंस करते हैं,
तो ये छोटी छोटी इमोशंस उनको हर्ट करती है. देन दे थिंक कि यार मुझे इससे बाहर क्यों निकलना है मुझे. दैट इज कॉल्ड अवेयरनेस आ गई उसको अपनी इमोशन के प्रति. जैसे हेट्रेड हो गया, जेलस हो गया, गुस्सा हो गया, कि ये मुझे गुस्सा आया है. पहले तो हमें ये पता चलेगा कि इस गुस्से ने मुझे खुद ही परेशान किया है, दूसरे को नहीं परेशान करा. मैं अपने फ्रेंड को नहीं करा. गुस्सा करके मैं अपने मम्मी पापा का क्या कर लूंगा, वो मेच्योर है, थोड़ी देर बाद वो चुप कर जाएंगे, वो इतना प्यार करते हैं आपको, लेकिन मुझे तो अंदर से हर्ट हुआ. देन फिर जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, देन वी प्रे टू डिवाइन और गुरु कि मुझे इससे बाहर निकलना, ये मेरे अंदर बहुत परेशानी कर रहा है. करेक्ट. ठीक है. फिर अवेयरनेस से हम धीरे धीरे उससे बाहर आना शुरू कर देंगे विद प्रैक्टिस ऑफ द टेक्निक. The important technique is Sudarshan Kriya. Sudarshan Kriya is nothing but breathing technique. Yeah, it's so simple and it is very deep and profound. And without breath, nothing is possible, isn't it not? Our life itself is nothing but breath. But if we don't give importance to that breath, especially emotions can be very easily handled with breath. And slowly this particular whatever emotions, with the help of the technique and with blessings of Gurudev, you will see that it transcends. And what happens is a lovely emotion. Love, slowly see all the emotions that is connected to love. The negative emotions is because of love. You love somebody, that's why, because you love anyone. See, it's either even a puppy or a cat you love, you be possessive of that, right? So all the emotions that is there, it's all love. That's what Gurudev very clearly says. So once you know that this is out of love, then the acceptance comes. No, then Anju, however Anju is, I accept her. I understand that she also goes through emotions. She also understands, yes, Priya goes through emotion. So there'll be total acceptance of however they are. Then here it gets transcended. As you know, Anju mentioned, awareness will start dawning in with the practice of Kriya. And with the awareness, what happens is love transcends into devotion. Devotion is a very beautiful, what you say, it's a very beautiful एक्सपीरियंस ना. प्योरिटी, जैसे ही हम लोग इमोशंस को हैंडल करना शुरू होते हैं, वी आर वेरी सेटल डाउन एंड पीस, वो धीरे धीरे फिर भी डिवोशन की तरफ हम जाना. जैसे प्रिया दीदी ने बताया, गुरुजी ने सुदर्शन किया, जिसको हम एक ब्रीदिंग टेक्निक भी बोलते हैं. ब्रेथ के ऊपर ही गुरुजी ने कंसंट्रेट क्यों किया, क्या चीज थी कि गुरुजी ने पूरा फोकस ब्रेथ के ऊपर डाला? बिकॉज ब्रेथ ही एक ऐसी चीज है जो बहुत सारी चीजों को हैंडल कर सकती है एंड वेरी क्लोज टू अस. करेक्ट. वो इतनी हमारे पास है बट हमने कभी नहीं देखा है. That's because it's close to us. ग्रांटेड ले लिया ना उसको. और यही एक ब्रेथ है जिसके थ्रू हम अपनी लाइफ में जितना भी, ऐसे लाइफ में सब कुछ आता है बट हमें यही इमोशंस को हैंडल नहीं करना आता, तो हम सारा दिन, एक दिन अच्छा, एक दिन बुरा, एक दिन ऊपर हम बहुत एनर्जी लेवल हाई, एक दिन फिर नीचे, एक दिन फिर हाई, एक दिन ऐसे 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 गोल वेव्स में ही चलते रहते हैं. बट ये जो ब्रेथ हमें सिखा देती है, अगर हम परफेक्टली बेटा इसको सीख जाते हैं, कोई ज्यादा लंबी टेक्निक नहीं है. फॉर टीनेजर इट इज हार्डली 15 मिनट्स और फिर उससे छोटे बच्चों के लिए 3 मिनट्स. उससे छोटे बच्चे तो वो वैसे ही they are right with the meters. हम लोग जब कोर्स लेते हैं प्रिया दीदी, हम देखते हैं ना कि 8 to 12 और 12 के बाद एकदम से बच्चों का शिफ्ट ही हो जाता है कि हम खुद ही हैरान हो जाते हैं कि क्या हो गया इनको. तो हुआ कुछ नहीं होता, अंदर इतना हार्मोनल चेंजेस और उसके साथ साथ ये इमोशनल चेंजेस आती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है. उस टाइम ये सुदर्शन क्रिया हमारे बहुत काम आता है. And when we start doing it at a very early age, this love transcends into devotion. And devotion is the highest form of love. See, first it begins like people say, no, I'm devoted to my friend. It's a very simple word. I'm devoted to my husband. I'm devoted to my mother. I'm devoted to my child. That's also perfect. That means it's a focused energy. So you're not shabby. You're not everywhere. The energy is not everywhere. It was everywhere, shattered when it was an emotion. When it became devotion, sharper and laser beam ho gaya. Now what will happen is this entire thing you're focusing on one. This is the first level of relationship, which we say devoted. When it transcends even more with the practice of spiritual practice, what happens is
You start becoming devoted to the divine, to the guru. And this is the ultimate that anybody can experience, because that devotion has power. It is so clear, it is so pure, and I don't know how to tell. It's very peaceful. It's very difficult now. You कैसे प्रिया दीदी ने, हमने जब ये टॉपिक चुना डिवोशन स्पेशली बच्चों के लिए, तो हमें लगा ये बड़ा हैवी टॉपिक है बच्चों के लिए डिवोशन, लेकिन जब इसके ऊपर हमने पूरा सोचा समझा, हम लोगों ने आपस में डिस्कस किया कि भगत प्रहलाद की स्टोरी प्रिया दीदी ने सुनाई, भक्त प्रहलाद, करेक्ट। तो क्या एज थी उनकी, डिवोशन की वजह से वो फोकस थे, तो दैट वाज द डिफरेंट टाइम। बट अगर अभी हमने अपना कोई पॉजिटिव टारगेट पूरा करना है, तो दिस इज द ओनली थिंग। Imagine, you know, we devoted to that thing. Correct. See, from a point of view of job, studies, the more you focus on one particular subject, because your energy is channelizing and getting into that subject, you will definitely get it. You will definitely get it. Second is, if you're focusing on any relationship you want, whatever you feel is important, but it should be one pointed focus. क्योंकि वो energy इतना sharp है कि, you know, it's like a laser beam. Things will start changing, and you will see that both of them, the relationships in both of them, will start having a different, it's a very different dimension of understanding. I think our grandparents were sensible to lead such a devoted life. Now it's all variety, but once again, there are very few people who are devoted. वो अभी भी है, because we are all compromising. So that compromise comes with devoted, and you will do that compromise with, you know, awareness and understanding. It's okay. And then comes the highest of devotion. That is, you know, as Anju was telling, Bhakta Prahlada's emotion, where he had only Narayan in the Narasimhan form in his heart. What happens is the divine comes and helps you at every stage, and you will have a fearless in you that I have the divine with me. That is the highest form of devotion. And here it is Gurudev. For us, because we have Shri Shri Ravi Shankar Gurudev, the highest form of, when you start focusing on a guru, especially on a living guru, what happens is you're channelizing your energy to that Gurudev, who is the Almighty and who's teaching you each step. So see, it can be anything. It can be divine. It's your wish, what you want to be devoted to. For us, it's Gurudev, so we are mentioning Gurudev. But if you want to see, you can also take an example of Hanuman. Lord Hanuman, he had only Ram, Sita, Ram. Sita was also Sita's in Ram. So that's why, you know, Ram, Sita, he's saying. So if you see, in his heart, it was only Ram. And Ram's heart had only Hanuman. In fact, Gurudev was once mentioning, na, how come Ram was saying, how is it to be Hanuman? Imagine the Lord wants to be a devotee. Isn't it not the highest form? So the highest form, everything has a process. So when you reach the highest, you will start experiencing devotion. That is when tears of gratefulness comes into your eyes and you feel full. You feel complete. You feel everything is taken care. And that is exactly the state of, what you say, a devotion which each of us experiences at any school of thought. Whichever school of thought is, why we say devotion. So many stories on devotion, Lord Krishna, lots, Anju. Devotion, you can speak for hours together. It's only scientifically, if you see, it's focused energy to one direction, and focusing on one makes you very profound. What happens to us is we become more deeper. Our understanding for each other becomes more. We'll be able to sense very little. Even if Anju doesn't open her mouth, I'll be able to understand her because of the depth I have within her. Getting it? So devotion is the most powerful, it's the most powerful experience that anybody can, and it is possible in this lifetime. ये भी बड़ा कॉमन है प्रिया दीदी, बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि हमारा बच्चा इस लेवल तक तो बहुत अच्छा था, अभी पता नहीं इसको क्या हो गया, ये पढ़ाई में फोकस नहीं है, ये वैसे बहुत गुस्से वाला हो गया, हमारे से बड़ी ऐसे इरिटेट सा रहने लग गया। ऑल दिस के उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं जो उसको समझ नहीं आ रहे हैं। इवन के पेरेंट्स क्या करेंगे, साइकेट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। मोस्टली पेरेंट्स क्या करते हैं, वो बच्चा जी ये रोता है, ये एंजाइटी अटैक होना शुरू हो गए,
एग्जाइटी अटैक का मतलब ये नहीं है कि वो बीमार हो गया है, उसको सिर्फ ये है कि उसको अपने अंदर जो भी उठ रहा है उसको हैंडल नहीं करना आ रहा है। तो उसके लिए सिंपल बहुत, सुदर्शन क्रिया इज द मतलब परफेक्ट मेडिसिन जिसको बोलते हैं कि उसके लिए आपको कुछ करना ही नहीं है, सिर्फ अपने ब्रेथ के साथ जुड़ना है एंड यू कैन हैंडल इजीली, यू कैन हैंडल। फिर ये छोटी सी टेक्निक अगर बच्चों को छोटी एज में ही मिल जाए तो वो अपने ये भी लाइफ के जो चेंजेस होते हैं 8 से 12, फिर टीन एज में आए, फिर ग्रो अप आए, कॉर्पोरेट सेक्शंस में या दुनिया में निकले, तो इन सब को उसको इंटरनली स्ट्रांग बना देते हैं बिकॉज वो अपनी अंदर से जुड़ा है। जब हम अपनी किसी अंदर जुड़ोगे तो पकड़ा हुआ है आपने, कितना भी तूफान आए आप अपने से पकड़ के रखोगे तो आप निकल जाओ। पेरेंट्स आपको कितना खुश करेंगे, मम्मा आपको कंसोल कर सकती है, पैम्पर कर सकती है, पापा आपको पैम्पर कर सकते हैं, चलो आज बाहर जाते हैं, आपका मूड चेंज होगा, वो टेम्परेरी होगा। हमें अपना मूड विद आवर सेल्फ, विद आवर ब्रेथ परमानेंटली सेटल डाउन करना है। हमें किसी को सिखाने का माध्यम बनना है, ना कि कोई हमें सिखाता रहे। तो ये हम शुरू से सीख जाएंगे तो हम आगे भी किसी को सिखा पाएंगे, बिकॉज तुम इंटरनली स्ट्रांग हो तो तुम किसी को स्ट्रांग कर पाओगे ना। हम खुद इंटरनली स्ट्रांग नहीं है, किसी को लेक्चर देना बहुत आसान है। Okay, so get yourself connected inward because everything is there inside us, and transcend the emotion to devotion, and then you see life becomes very beautiful. No, Gurudev every time says the highest form is possible in this lifetime. You know, for every in the living, what you say, in the family life, in the relationship itself, the what we are seeing around is very gross. People have lived a very deep life. We have forgotten it. Now we are all behind material and money. But nowadays, teenagers have changed. They want something more. They are looking out for, especially youth and teenagers, they want something more. They are looking out for something more in life. So that is why more and more people are coming into spirituality and they want something deeper. They are not like, yes, we have taken over a lot of Western emotions, not getting, we are all over. But still, as they start practicing concentration pranayama is there in made yoga level 1. गुरुजी बोलते सिंपल, अगर आप एक व्हाइट पेपर लोगे उसमें एक लाइन लगाओगे थैंकफुलनेस, यू हैव अ प्रॉपर, आपको 2 हाथ मिले हैं, मतलब बाजू मिली, आंखें मिली, टांगे मिली, पेरेंट्स मिले, यू हैव ईच एंड एवरीथिंग एक्सेसरी मिली, ये तुम्हारा देखो, ये तुम्हें मिला, डिवाइन ने दिया। जो नहीं दिया वो बहुत कम होगा। फोकस कहाँ है हमारा? जो नहीं दिया, मेरे पास वो ये नहीं है, उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास नहीं है, उसके पास ये फोन है, मेरे पास नहीं है। सो वेरी स्मॉल थिंग, वेरी स्मॉल थिंग्स, बिकॉज बहुत लंबी लिस्ट होगी जब आप लिखना शुरू करोगे। व्हाट यू हैव, आई थिंक सो प्रिया दीदी, वो बड़ी लंबी लिस्ट होगी, बट जो नहीं है वो थैंकफुलनेस नहीं। करेक्ट। So be thankful for whatever you are and get into the, transcend yourself to be a devotee, because being a devotee is something very amazing. It's an emotion. You can keep anybody front, but what devotion ka jo bhi energy hai, that is, it's beautiful. It's very difficult to express how to be a devotee. थैंकफुलनेस बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा डिवोशन के साथ। जैसे जैसे थैंकफुलनेस आती जाएगी, हम अपनी लिस्ट देखेंगे, ये भी है, ये भी है, ये भी है, then comes this and then comes this, right? Then after that the world will be a very beautiful place for you to live. You will feel that you have only people and people around us who's there to care and share for this. The only reason is focus on one part of your emotions and transcend the emotion to the highest, because it's possible. When it is possible, we should just go ahead and have it. And this is here once again the techniques of all the teenagers, pranayama and sudarshana kriya plays a major role. The more you start doing the pranayama, putting your focus more on the breath, you will see that changes will start happening from within. And this change, what we experience, the bliss that we experience, the peace that we experience, is what will unite the world into one, and it will only bring peace to everyone around us. Anything else, Anju, to add on? Nothing. हमेशा थैंकफुलनेस में रहना, यही है, बिकॉज ये थैंकफुलनेस आपको बहुत आगे तक लेके जाएगी, और ये थैंकफुलनेस से ही तुम्हारी हर चीज कनेक्टेड हो जाएगी।
तुम अंदर से सेटल डाउन हो जाओगे, तुम्हें लगेगा मेरे पास बहुत ज्यादा सारा कुछ है। जब बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा ही मिलेगा ना। Okay, so abundance will flow in your life. So with this, we come to an end of the series 4. Very soon you will have series 5 upcoming. So thank you all, and thank you Anju for, Thank you, for such a Priya दीदी। wonderful interaction. प्रिया Thank you. दीदी के लिए बहुत बहुत थैंक यू, उन्होंने ये टॉपिक चुना।